Mumbai to Delhi. Now, Diwali is a month away, but fireworks over firecrackers have already started in the national capital. BJP MP Manoj Tiwari has petitioned the Supreme Court now to revoke the complete ban on firecrackers in the city. In his petition, he says that a complete ban is anti-Hindu and impacts the livelihood of traders. He has also argued that Arvind Kejriwal's move of a complete ban on crackers is an Aurangzeb-type move against Hindus. Mr. Manoj Tiwari, and we'll speak to him in just a bit, wants at least green crackers to be allowed on Diwali day. Delhi, just by the way, is the most polluted city in the world, and AQI levels shoot up every year post-Diwali, sending many children and elderly people to hospital in the city. Is Manoj Tiwari's demand reasonable, or is it a political stunt? That is exactly what I'm asking Mr. Tiwari. मनोज जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही महीना बचा है दिवाली के लिए और एक महीने पहले आपने ये पिटीशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। आप दिल्ली से एमपी हैं, आप भी वही हवा ब्रीथ करते हैं जो हम सब करते हैं। हमको पता है कि हाल कितना खराब है, तब आप क्यों ये पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट गए? हाँ, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको समझना चाहिए। जब पिछले साल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते, हम पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगा सकते। और जैसे ही वो कहते हैं कि ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता, तो फिर दूसरा रास्ता क्या निकलता है, फिर इसमें क्या क्या हो सकता है। तो जो दूसरे रास्ते हो सकते हैं उनको तो समझना ही चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। लेकिन जिन राज्यों ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया, हम उनको बोलना चाहते हैं कि आप लोगों ने पोल्यूशन बचाने के लिए क्या क्या काम किया, और ये ग्रीन जो ग्रीन क्रैकर, फायर क्रैकर्स होते हैं, उनसे कितना नुकसान होता है पोल्यूशन को। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि फायर क्रैकर्स आर नॉट इवन इन टॉप 10 ऑफ एयर पोल्यूशन एज पर वेरियस स्टडीज इंक्लूडिंग IITs। देखिए, IIT ने भी अपना एक शोध किया है और भी बहुत सारी संस्थाएं कहती हैं कि ये जो पटाखे हैं वो 10% पोल्यूशन के कारण होते हैं। बाकी और कारण क्या हैं, क्या उस पर कोई काम किया गया है? और अगर हम ग्रीन फायर क्रैकर्स लेते हैं, ग्रीन पटाखे यूज करते हैं, तो हमें ये भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय कोर्ट में हूं, मैंने PIL करी है कि इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक तो एक ग्रीन क्रैकर क्या चीज, मनोज जी एक मिनट, एक तो एक ग्रीन क्रैकर होती क्या चीज है, यही एक मिसनोमर है, समझने की बात है। लेकिन चलिए, अगर मैं मान भी लूं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ 10% प्रदूषण जो होता है वो दिल्ली में वो फायर क्रैकर्स की वजह से होता है, बिल्कुल सही बात है। इट्स नॉट द ओनली रीजन। यू हैव स्टबल बर्निंग, यू हैव वेहिकुलर पोल्यूशन दैट इज कमिंग इन, दैट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर पोल्यूशन। But even 10%, even if crackers contribute to 10% of pollution in Delhi, that's huge. Why ask for it? Things are already bad and you want to make it worse. सबसे पॉल्यूटेड शहर क्यों है? क्या इस शहर में स्मोक टावर नहीं लगना चाहिए था? क्या इस शहर में जिस प्रकार से आप देखिए, हमने पूरा निकाह है, क्या कोई स्मोक टावर लगा? क्या कोई व्हीकल पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रोड पर कुछ काम हुआ? क्या पोल्यूशन के और सारे साधनों पर दिल्ली सरकार काम नहीं कर सकती? सिर्फ इन त्योहारों को टारगेट करना ही एक उपाय है। और फिर ग्रीन फायर क्रैकर्स, मैं बात कर रहा हूं ग्रीन फायर क्रैकर्स की, ग्रीन पटाखों की। ग्रीन पटाखों से ये पोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हम उन्हीं के आदेश को पालन करने की बात कर रहे हैं। हम भी पोल्यूशन को लेकर उतना चिंतित हैं, लेकिन पोल्यूशन के 90% और जो कारण है उस पे दिल्ली सरकार ने क्या किया? आप उसका हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताएं। ये लोग केवल एडवर्टीजमेंट देते हैं,
एक स्मोक टावर लगा के फोटो खिंचाते हैं, 15 करोड़ खर्च करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पोल्यूशन के सारे साधनों को छोड़ दो और एक दिवाली को बैन कर दो, और वो भी ब्लैंकेट बैन कर दो। मैं सामान्य पटाखों के जलाने की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रीन क्रैकर्स की बात कर रहा हूं। और ग्रीन क्रैकर्स को यूज में लाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी को ध्यान में रखते हुए कहा था कि ब्लैंकेट बैन नहीं लग सकता। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं, हमें हमारा त्योहार ग्रीन क्रैकर से तो मनाने दिया जाए। आप देखिए आने वाले समय में ये जो बैन है अक्टूबर के महीने में है, आप देखिएगा इस दौरान अक्टूबर से जनवरी। अब मेरा ये भी एक एंगल है कि उस दौरान मैक्सिमम हिंदुओं के त्योहार हैं। क्या कहीं ये तो नहीं कि आप इसलिए टारगेट करना चाहते हैं? क्या ये तो नहीं कि आप किसी को खुश करने के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं? प्रतिबंध इस तरह के लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। और मेरा पूरा विश्वास है कि ग्रीन क्रैकर्स की बात आएगी और हम लोग ग्रीन क्रैकर्स के साथ दिवाली मनाएंगे। लेकिन तिवारी जी, एक चीज समझ नहीं आ रही कि आप मामले को हिंदू मुस्लिम क्यों बना रहे हैं? आप अरविंद केजरीवाल को औरंगजेब क्यों कह रहे हैं? आप फेफड़ों की बात करिए, लेकिन फेफड़े तो सबके खराब होंगे, पोल्यूशन की वजह से होते हैं। हिंदू का भी फेफड़ा खराब होता है और मुसलमान का भी फेफड़ा खराब होता है। तो आप इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों ला रहे हैं? नहीं, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। इससे अरविंद केजरीवाल का क्या लेना देना? औरंगजेब ने भी कभी बैन किया, अंग्रेजों ने भी बैसाखी जलियांवाला बाग में सब कुछ बैन किया। तो ये एग्जाम्पल तो देखा जाना चाहिए। और ग्रीन क्रैकर्स क्या पोल्यूशन पैदा करता है, ये बड़ा सवाल है। हम तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी नहीं ले, हम तो दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली सरकार भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पालन करने के लिए आगे बढ़ेगी। उसका कानून से बड़ा कोई नहीं है। आखिरी सवाल, आप इसको एंटी हिंदू मूव क्यों बोल रहे हैं? एंटी ट्रेडर मूव माने बोलें तो मैं मानूंगी, इसको एंटी हिंदू मूव क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी पिटीशन में है ये बात। बहुत सारे आप देखिए, हम तो इसको हमारे अक्टूबर में बहुत सारे त्योहार होते हैं, सितंबर अक्टूबर में। लेकिन आप सोचिए कि इस सोच के पीछे हम अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात को हिंदू मुसलमान में मत ले जाइए। मैं सिर्फ जो हिंदू त्योहार हैं, सिख त्योहार है, गुरु पर्व है, उनकी बात कर रहा हूं। इसको इतने संकुचित विचारधारा में देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना त्योहार मनाना है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन करने से पहले ही मना किया है। ग्रीन क्रैकर शुड बी अलाउड, उनके आदेश का पालन करवाना है सिर्फ। ओके, thank you very much, Manoj Tiwari, for putting forward your views. You are the one who's now gone to the Supreme Court to say that let there be some crackers, green crackers, this Diwali in Delhi. Rahul Ishwar is an activist joining us. Dr. Sanjeev Bagai is chairperson of the Nephron Clinic. He's joining us. And Vivek Chattopadhyay is a senior program manager at Clean Air Campaign, joining us. Gentlemen, we'll keep this brief. Dr. Sanjay Bagai, I want to ask you this. Is what Manoj Tiwari is saying reasonable? Hi, good evening. I think we need to have a rational thinking. There is no politics and no religion in safety or healthcare of any individual, the citizen of. There are 7 million deaths globally because of air pollution every year, out of which 50% are in India. More than 50 major organs, including heart, lung. Dr. Bagai, I'm afraid I will have to sort of, your audio is giving me a little bit of trouble. I can't hear you very clearly. So I'll let my team just fix your audio in a bit and then come back to you. Vivek Chattopadhyay, point is, the point that has been made by others, and not just this year, this debate erupts every year. Smog season is upon us. Of course, Mr. Manoj Tiwari has now taken the initiative and petitioned the Supreme Court, and the Supreme Court is saying, all right, we will take up your petition on 10th of October, which is 14 days ahead of Diwali. I want to ask you, many people will say he's making a fair point. A, ek din se kya hota hai? B, the fact is that look at what the major polluters for Delhi are. It's stubble burning, it is vehicular pollution. Then why target just one day? What is the harm in green, eco-friendly firecrackers? See, the
point is like no firecracker can be green at per se, unless until it is electric firecrackers, which are like they generate like sound and light. Okay, so if we are burning something and these are like crackers are made in such a manner that definitely they are going to generate a smoke and pollution. It is claimed that, and it has been tested by the organizations, that some amount of pollution could be less in green cracker, but they are not pollution free. And if a huge quantity of crackers are burned, as we know that on Diwali day, it happens, and Delhi's air quality is such, and I would say not just Delhi, entire Indo-Gangetic plain, in most of the cities and towns, the air pollution is already very poor condition. In that condition, it doesn't make sense to further pollute the air even for a single day. Because and the quantum of pollution that we put in the air, that actually like pollutes the air, and it's not just the pollution. We often forget that its air quality is turning bad. It's actually harmful for our health. And from the health and environmental point of view, it doesn't make sense to further pollute the air. Okay, so I want to, since over and over and again, Manoj Tiwari has quoted the Supreme Court. This is what the Supreme Court bench had said. They had said, under the guise of enjoyment, you manufacturers cannot play with the lives of citizens. We are not against any particular community. We want to send a strong message that we are here for the protection of fundamental rights of citizens. We want to send a message that we are here to protect the rights of people. We have not put a 100% ban on firecrackers. Everyone knows what the people of Delhi are suffering because of pollution that is caused by firecrackers. Rahul Ishwar, sure, the Supreme Court has not said blanket ban. Sure, most states have a partial ban where they allow what is called green firecrackers, although the expert on the panel, Mr. Chattopadhyay, is saying there is no such thing as a green firecracker. If it's a firecracker, it will cause pollution. My question to you is, while it may be okay for this partial ban to be implemented where you are sitting in Kerala, not so in Delhi. Look at Delhi's pollution levels. It is the most polluted city in the world. Why would you add even 1% of extra pollution to this city and make things worse for children and for the elderly? Nobody wants to add 1% of extra pollution, but let us remember the 99% pollution otherwise also caused. The vehicle, we should have better city planning, there should be waste disposal, maybe stubble burning. So many other issues are there. See, none of us are blind or blind believers to say that we should have our Diwali crackers at any cost or any other festivities at any cost, because we also have family at the same point of time. Always when there are Hindu festivals, when our sentiments are involved, people take it as a point to say that you should have waterless Holi, you should have crackerless Diwali, you should have so-called progressivism, you should have so-called this and that. Always Hindu festivals are targeted, and Hindu festivals have become some kind of a soft target. It's a very prevalent feeling among many sections of Hindus beyond politics. That's the reason why, yes, we are on people like Bagasar is there, Dr. Sar is there. We all respect his eminence. So please guide us in a better way to celebrate our festivals rather than having a blanket kind of a man of saying that you should not celebrate it. So yes, some kind of give and take should be there. Some kind of consensus and middle ground should be there. But at the end of the day, when you stop firecrackers and Diwali and such celebrations, it takes the color out of life. It takes the fun out of life. So please understand that sensitivities, find a sensitive middle balance or middle ground, and guide us how to do it better, rather than saying that we are all backward, regressive people who are enjoying health of the people. So people need to have that cultural sensitivities being upheld. There is historical sentiments accepted and adapted to it for centuries altogether. Please remember, in one way or the other, centuries altogether. So let us respect that and find some kind of a consensus rather than having some kind of a blanket and saying that this is all bad. Dr. Sanjeev Bagai, come in here. Is it a woke argument? Essentially, what what my friend Rahul Ishwar is saying is this is a very woke argument that Diwali hai, don't celebrate it with firecrackers. Holi hai, don't celebrate it with water. You need to have some fun in life. You need to have some joy in life. And if firecrackers are giving you that fun and joy for one day, what is the harm? Do you see this as a targeting of Hindu festivals? Okay.
Good evening. I'm a staunch Hindu and I'm a very loyal Indian, but I think we should keep religion and politics away from healthcare and safety of citizens. What is very important is that there are millions of deaths which are directly caused by air pollution. Any contribution towards air pollution, which also includes crop burning, road dust, emissions from factories and industries and vehicles, must be curbed. But having said that, I would really suggest that these toxic gases, carcinogens, can have a better way forward by diminishing the effect if you have a centralized small fire show in an open area in each city where people can come and enjoy. This is a real norm which is done in New York, in Sydney, in other places. They also have firecrackers. But if you're going to have firecrackers in close clusters, in and around buildings, in close residential colonies, it's bound to have a cumulative effect on health. This is not about Hindu sentiments. I'm a strong Hindu. We will celebrate Diwali, but let's do it safely, keeping the health of all citizens in mind. Mr. Chattopadhyay, my last question is to you. 2021, there was a complete ban on firecrackers in Delhi, and yet the AQI level on the day after Diwali was 464. That is severe. Despite a complete ban. So many people will say, if in any case the AQI level is severe, in the severe category, 464, what's the harm? So if somebody is, for example, drowning, it doesn't make sense to pour further water on him or so that the person dies. So the air quality in such a bad, like hazardous condition, what we call very poor is actually termed poor is actually hazardous in other countries. Other activities are even banned, even the schools are closed and emergency alerts are issued. So I think we should not take it lightly in that sense. Health and Delhi's air quality is such a condition that we should identify all the activities. I won't say just Diwali, any other activity, like all the issues has to be taken care of because winter is approaching and we have to act fast. Yeah. The smog season is upon us. The smog season is upon us. People will start falling ill in Delhi very quickly, and Dr. Bagay will have his hands full. Thank you, Dr. Bagay, for joining us. Rahul Ishwar and Vivek Chattopadhyay, this debate is not over. It continues because the matter is now in the Supreme Court. Will a blanket ban on firecrackers in the national capital be lifted ahead of Diwali? The Supreme Court will decide that. Delhi's MP, Manoj Tiwari, has petitioned the court now.